ओके प्रैक्टिस करते हैं ड्राइंग पे। देखिए यहाँ पे सिंपल ये इसका टॉप व्यू यहाँ गिवन है एंड देन ये साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ये यहाँ से इसका ये गिवन है। ओके इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें जो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेस है 110 एंड 60 ओके इसका है, तो इसको बेस को ड्रॉ करेंगे एंड इसकी जो विड्थ है यहाँ पे वो 20 ठीक है। मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स स्क्रीन पर आएंगे, स्केच एंड मैं यहाँ से लेता हूँ टॉप प्लेन एंड टेक कॉर्नर रेक्टेंगल एंड ड्रॉ इट। Now right click and take a smart dimensions. Now take a smart dimension and specify the length of 110 and specify the length here 60. Okay. Now right click extruded boss face and boss face width here is 20. Now okay. Okay. Then again select the face and right click and you can also choose the plain white. Okay. Now here draw this circle and which is 35 and 25 diameter. Right click, take a smart dimension, specify the diameter 35 and specify the diameter 25. Okay. From here to center distance is 31 and now from here distance is 30. Yeah. Sketch is fully defined. Right click, extruded boss face and select this or give the boss face 5. Now okay. Take it. Then select the surface and sketch and draw the surface. Take corner rectangle and draw this. Okay. Now again. Okay. Then again. Okay. Now take power trim and trim the entities. Take a smart dimension and specify the dimensions as 40, 44. Okay. And this is 17 and this is also 17 and this is 10. This is 10 and this is also 10. Okay. Now okay, select the line and the line or make collinear. Okay. Now define the distance. Take smart dimensions and the distance is 10. Okay. Now sketch is fully defined. Right click, extruded boss face and give the boss face distance is 50. Okay. Right click and give the dimension 50. Now okay. Select the face and sketch. Okay. Take circle and draw the circle here and specify the dimensions as 30 diameter and now 30. Okay. From here the distance is 25 and now select the midpoint of the line and the center point and hold the control key, make vertical. Now sketch is fully defined and right click, exit from sketch and feature extruded cut and cut कीजिए up to surface. Okay, up to surface आपको surface select कीजिए वाला. Next. Okay. So here is model ready. Now file and save the model. Okay, save it and file, make drawing from parts and browse, select a standard sheet. Okay. Okay. Drawing model, do left click on it and preview on रखिए आप यहाँ से select it, side view and then top view
फ्रंट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, सेट इट विथ एज दीजिए इसको यहाँ पे एंड राइट क्लिक. ओके, नाउ सेलेक्ट द साइज 1:1 एंड इंक्रीज इट. ओके, ठीक है. देन इसको सेट कीजिए थोड़ा. ओके, नाउ एनोटेशन, मॉडल, डायमेंशंस लगाएंगे इसमें. इंटायर मॉडल, import item into all view and select all the annotation, or you can also deselect it and drag. ठीक है, तो 5 and then 25 and then 30, तो मैं इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, and 50 and 20, यहाँ पे 60 and 10 और 10. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 70 and 70. ठीक है, नेक्स्ट 10, 40 and then and okay, 30 and 31. Okay, now file and save the drawing. Save as type में आप चूज कीजिए यहाँ पे Adobe Portable Document Format PDF and then save it. तो ये PDF जनरेट कर देगा and print it. ओके, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें. थैंक यू.